Okay, students. So very welcome to all of you. Now let's continue from where we have stopped last time. Recollect, we are doing type 7, that is increasing and decreasing functions. So next example, that is problem number 4. Please make a note of this. Find the values of x for which the given function is a part strictly increasing and b part strictly decreasing. Now please remember, strictly increasing means monotonically. We have done monotonicity. So let us write down solution for problem number 4. चलो मैं यहाँ से start करता हूँ. So let us first of all consider the given function. Write down solution for example 4. So the given function is nothing but x upon x square plus 1. Now we need to differentiate the function with respect to x. इसका derivative f dash of x find करना है हमें. So write down differentiating with respect to x, we get. Now you know that we have to use u by v rule. So लिखो therefore f dash of x is nothing but equal to u by v rule. So v derivative of u minus u derivative of v. तो इसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा 2x upon in the denominator we will be having x square plus 1 the whole square. ठीक है, write down this. Now when we will simplify, इसको जब हम simplify करेंगे students, तो see what is going to happen. x square plus 1 है और ये minus 2x square है. So this will be written as nothing but 1 minus x square. Let us cut short the number of steps. X square minus 2x square minus x square देगा and denominator is x square plus 1 the whole square है. ये हमारा f dash of x है. ठीक है, so please note down till here, then we'll move ahead. Now what is saying, we want to find out the values of x for which the function is strictly increasing. So f dash of x तक का तो procedure same है a part और b part के लिए. Now let us do the working for the a part of the problem. ठीक है, strictly increasing. So the function is strictly increasing. ऐसा लिखो. The function, if the function is strictly increasing, if the function is strictly increasing, so therefore what will happen students? So as we all know that f dash of x will be strictly greater than 0. Strictly increasing word use किया है, so it will be strictly greater than 0. This is known to us. Now what is f dash of x students? So f dash of x is nothing but 1 minus x square upon x square plus 1 the whole square is always greater than 0. F dash of x will be always positive. So now what will happen? Therefore from here what will we get? 1 minus x square will be always greater than 0. Now why 1 minus x square will be always greater than 0? Because you observe यहाँ पे जो denominator है, so write down the reason. Since the denominator is x square plus 1 the whole square, this itself will be always positive ना, कि हमेशा greater than value 0 ही value देगा. आप x का कोई भी value डाल लो, negative value डालो चाहे positive value डालो, you put any value of x, ठीक है, ये इसका square करेगा और उसका भी square है. So denominator will be always positive. Recollect, a by b greater than 0. So denominator is always positive. So numerator has to be positive. तभी ये condition satisfy होगा.
So therefore, what do we get? 1 minus x square is greater than 0 means 1 is greater than x square. Shifting to the other side of equality. Now 1 is greater than x square. It means that x square is less than 1. अब x square का वैल्यू 1 से छोटा कब होगा? सोचो जरा आप, थिंक लॉजिकली. x square का वैल्यू 1 से छोटा कब होगा? तो जब x का वैल्यू will be between -1 and +1. Think logically. X square is less than 1 means mod x is less than 1 means x का वैल्यू is between -1 and +1. तो आप -1 और +1 के बीच में x का कोई भी वैल्यू डालो, उसका स्क्वायर हमेशा 1 से छोटा आएगा. So now this function is increasing for what values when x belongs to -1, 1. तो लिखेंगे final answer, but you read down till here first. I hope it is understood till here. ये कैसे आया everyone? Yes, sir. Okay, very good. तो देखो, the function is increasing. Final answer. The function is increasing or you can write down strictly increasing word. Function is strictly increasing if x belongs to the open interval -1, 1. ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं x lies between -. तो दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया है हमें, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अगर x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में है तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो a पार्ट इज ओवर. नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द b पार्ट. Okay, if they ask you both a and b part together, this problem is going to carry 3 marks. सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या सिर्फ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला केस पूछा तो वो प्रॉब्लम 2 मार्क के लिए पूछेंगे. दोनों एक साथ पूछ लिया तो कैन बी आस्क्ड फॉर 3 marks. नाउ लेट अस डू द वर्किंग फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. f dash of x तक का प्रोसीजर सेम है. नाउ लेट अस डू डिक्रीजिंग का प्रोसीजर. ओके, चलो स्टार्ट डूइंग. तो इफ द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेंगे हम. ठीक है, तो आई विल सब दिस ऑफ ऑब्वियसली बी पार्ट. So now what will happen? The function is strictly decrease if the function, if this is b part, function is strictly decreasing. So what will happen? F dash of x should be always less than 0. What is f dash of x, students? So f dash of x is 1 minus x square upon x square plus 1 the whole square should be less than 0. अब हमें तो पता है कि डिनोमिनेटर कभी भी लेस देन 0 तो होने नहीं वाला है. Denominator is never going to become less than 0. So what is less than 0? So we know that 1 minus x square should be less than 0. Why? Same reason. क्या reason है? Since x square plus 1 the whole square is always greater than 0 ही रहेगा. वो कभी equal to 0 भी नहीं होगा. आप x का वैल्यू 0 भी डालोगे तो भी वो 1 ही आंसर देगा. तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर को नेगेटिव होना पड़ेगा. तो 1 minus x square is less than 0. That means it means what? 1 is less than x square. Now 1 is less than x square means what? X square is greater than 1. अभी आप लॉजिकली सोचो, x greater than 1 कब होता है? x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 कब होता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर 1 से बड़ा कब होगा? थिंक. तो वो नंबर 1 से बड़ा तब होगा जब नंबर खुद 1 से बड़ा है. दैट इज आइदर x itself is greater than 1 or else
x is lesser than -1, x square will be greater than 1. But when x itself is greater than 1 or x is lesser than -1, either this or this condition should be satisfied, है ना? आप कोई भी 1 का वैल्यू ले लो, उसको स्क्वायर करोगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा. लेस देन -1 कोई भी वैल्यू ले लो, -1 से छोटा वैल्यू, -2 ले लिया फॉर एग्जांपल, -2 का स्क्वायर करो तो 4 हो जाएगा. इज 4 ग्रेटर देन 1? यस. तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है ना? x इज ग्रेटर देन 1 और x शुड बी लेस देन -1, है ना? तो आप लिखो therefore the function is strictly decreasing. ऐसा लिखो फाइनल आंसर. therefore the function is strictly decreasing if x is greater than 1 or x is lesser than -1. अभी ग्रेटर देन 1 मीन्स इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 कॉमा इंफिनिटी, 1 से बड़ा, एंड x लेस देन -1 मीन्स x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1. क्या आंसर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं. यू कैन लिव योर आंसर हियर इटसेल्फ और यू कैन राइट डाउन इन फॉर्म ऑफ इंटरवल ऑल्सो. पहले हम इंटरवल में लिख चुके हैं, तो अभी इस फॉर्म में लिख के यही आपका फाइनल आंसर है. So with this, we have finished off with question number 4. I hope everyone must have understood the procedure. Please make a note of this. So students, let us move on to the solution of the fifth problem. So let's first consider the given function. So the given function is 3x plus 1 by 3x. चलो differentiate with respect to x and find out f dash of x. So tell me what is f dash of x. 3x का डेरिवेटिव is 3. इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? It will be -1 by 3x square. 1 by 3 कांस्टेंट है. 1 by x का डेरिवेटिव -1 by x square. तो f dash of x is 3 minus 1 by 3x square. ये हमें f dash of x मिलेगा. So I hope everyone must have got this f dash of x. Now please do not take LCM after this step. I'll tell you. अभी मैं क्या प्रूव करना है? We have to show. अभी प्रूव करना है. We have to show that this function is increasing in this interval, ना? तो लिखो on the next line. Write down to show. ऐसा लिखिए आप. To show f of x is increasing in the interval 1 by 3, 1. ये हमें प्रूव करना है. मतलब हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ये जो f dash of x है that is greater than 0 but in this interval. ठीक है? तो that is what it means. तो हम एक इंटरवल तो दिया हुआ है हमें, तो that is x belongs to 1 by 3, 1. इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऐसा हमें शो करना है ना? तो therefore what happens? x lies between 1 by 3 and 1. x का जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में लाई करता है. अब इसका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल्स. प्लीज राइट डाउन द स्टेप्स अलोंग विथ मी. आई एम गोइंग स्टेप वाइज. अभी हमने x को कंसिडर कर लिया कि इस इंटरवल में लाई कर रहा है. ऑब्वियसली हैज टू, क्योंकि हमें उसमें इंक्रीजिंग प्रूव करना है. नाउ f dash of x को हमें ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है. नाउ वी वांट दिस f dash of x. वो हमें जहां पे x है ना, ये x के जगह पे हमें ये वाला f dash of x चाहिए. ठीक है? तो फॉर दैट वी नाउ हैव टू डू सिंप्लीफिकेशंस अकॉर्डिंगली. Now we are going to use some properties of inequalities. Now write down squaring throughout the inequality. सबसे पहले हम स्क्वायर कर देंगे. So write down for your reference ऐसा लिखो आप, squaring
थ्रू आउट, मतलब इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे हम इनइक्वालिटी का। तो जब इनइक्वालिटी का स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बिकम 1/9. 1/9 is less than x square and x square is less than 1. This is our first step. Squaring कर दिया. Why? That I will tell you, don't worry. तो देखो हमें x square मिल गया, बट हमें क्या चाहिए 3x square, सीधे डिनोमिनेटर, पहले x वाले टर्म्स के हिसाब से हमें मूव होना पड़ता है। तो x square आ गया, बट क्या चाहिए 3x square, डिनोमिनेटर देखो 3x square, तो आई विल मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 3। तो ऐसा लिखो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 3, और यू कैन सिंपली राइट डाउन मल्टीप्लाइंग द अबाउट इनइक्वालिटी बाई 3, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो जब हम इस पूरे इनइक्वालिटी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये 1/3 लेस देन 3x स्क्वायर एंड लेस देन 3 हो जाएगा। राइट डाउन, स्टेप वाइज आई एम गोइंग, बट वी डोंट वांट 3x स्क्वायर, व्हाट वी वांट स्टूडेंट्स, वी वांट 1/3x स्क्वायर चाहिए। तो 1 कैसे मिलेगा, तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो राइट डाउन ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल, ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल थ्रू आउट। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। 1/3 विल बिकम 3, 3x स्क्वायर विल बिकम 1/3x स्क्वायर। देखो लेस का ग्रेटर हो गया, लेस का ग्रेटर हो गया, और ये 3 का रेसिप्रोकल, तो दिस बिकम्स नथिंग बट 1/3। राइट डाउन दिस। I hope everyone has reached till here. ठीक है, अब देखो 1/3x स्क्वायर तो हमें मिल गया। नाउ along with 1/3x स्क्वायर वी वांट माइनस साइन, तो वी विल मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -1। तो ऐसा लिखो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय -1। अब जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो व्हाट विल दिस बिकम, -3 is less than -1/3x square, which is again less than -1/3. When we multiply the inequality by a negative number, the inequality reverses. देखो नोटबुक में मैंने आपको प्रॉपर्टीज लिख के दिए हैं इनइक्वालिटीज के। ठीक है, नाउ व्हाट वी वांट, 3 ऐड करना है। पुट इट डाउन, एडिंग 3 थ्रू आउट, सब जगह पे 3 ऐड कर देंगे। पुट इट डाउन, एडिंग 3 थ्रू आउट द इनइक्वालिटी। तो जब हम 3 ऐड कर देंगे तो +3 -3 0, इधर भी 3 ऐड कर देंगे, तो व्हाट विल दिस बिकम, 3 - 1/3x स्क्वायर, विच इज अगेन लेस देन 3 - 1/3। तो 3 - 1/3 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो दैट विल बी नथिंग बट 8/3। ओके, प्लीज चेक। So now what will happen, 3 - 1/3x square, ये हमारा क्या है, f dash of x है ना। तो लिखो therefore 0 is less than f dash of x and f dash of x is less than 8/3। ठीक है, write down this step। So what will happen, 0 is less than f dash of x means f dash of x is always greater than 0 and it is always less than 8/3। तो हो गया ना प्रूफ, f dash of x strictly greater than 0 आएगा ना, तो हो गया ना। they have proved that the function is increasing in this interval। तो लिखो फाइनल आंसर, hence the given function is ऐसे लिखो, since f dash of x is greater than 0, hence
the given function, hence the given function is, सिर्फ इंक्रीजिंग वर्ड यूज किया है तो सिर्फ इंक्रीजिंग लिखोगे तो भी चलेगा. हेंस द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग in the interval 1/3, 1 में function increasing है. But this is the method how we have proved the function is increasing. इसका method ही ऐसा है, ये steps involved है. So I hope everyone must have understood the procedure. F dash of x greater than 0 आया तो function increasing automatically prove हो गया ना, हमें वही तो करना होता है. चलो अभी फंक्शन डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, ये प्रूव करना है. तो ये प्रोसीजर सेम है. अभी ये पूरा इसका जो प्रोसीजर है वो सेम, बट खाली ये इंटरवल चेंज हो जाएगा. चलो राइट डाउन दिस, लेट्स डू दिस. फंक्शन डिक्रीजिंग है, प्रूव करना है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट डूइंग. Now the second part, we have to show that the function is decreasing in this interval, right? And the function is decreasing in the interval 1/9, 1/3. So that is x belongs to 1/9, 1/3. So x is lying between 1/9 and 1/3. Squaring on throughout the inequality. तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/81 इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1/9 हो जाएगा. तो पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/27 और ये हो जाएगा 1/3. ऑन टेकिंग द रेसिप्रोकल, तो 27 इज ग्रेटर देन दिस एंड इट इज ग्रेटर देन 3. अब मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे, सेम प्रोसीजर. मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे. देखो बीच में हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, वी वांट 3 - 1/3 x स्क्वायर. जो f डैश ऑफ x होता है ना, वो मिडिल में आना चाहिए. तो 27 का -27 ग्रेटर का लेस, और यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा एंड ये ग्रेटर का लेस, और ये 3 का -3 हो जाएगा. एडिंग 3 थ्रू आउट, एडिंग 3 करेंगे तो 3 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा -24. ठीक है, लेस देन दिस, इधर 3 ऐड हो गया और इधर 3 ऐड करेंगे तो +3 -3 हो जाएगा 0. तो जो f डैश ऑफ x है, तो देयरफॉर व्हाट इज हैपनिंग, -24 इज लेस देन f डैश ऑफ x एंड f डैश ऑफ x इज लेस देन 0. मतलब जो f डैश ऑफ x का वैल्यू है वो -24 और 0 के बीच में है. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि f डैश ऑफ x लेस देन 0 आया. अब क्योंकि f डैश ऑफ x लेस देन 0 आया, हेंस द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 1/9, 1/3. दैट्स इट, प्रॉब्लम इज ओवर. ठीक है, तो इट वाज जस्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स. खाली वो जो इंटरवल है वो चेंज हो गया, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम रहा. तो हमने दोनों प्रूव कर दिया. एक तो फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, देखो फंक्शन सेम है. दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, बट दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल. तो दोनों एक साथ कवर हो गया हमारा. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. अच्छा, इफ दे आस्क यू बोथ, ऐसा दोनों पूछ लिया उसने, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो श्योरली दिस प्रॉब्लम विल कैरी 4 मार्क्स. अगर सिर्फ इंक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग पूछा तो then that problem will become 3 marks. Note down. Any doubt, please let me know. Okay students, so let's move on to the solution for the 6th problem. Now what is to be done, we have to show that the function x minus cos x is increasing for all x. For all x means for all real numbers. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 is asked, इसका वेटेज होगा 2 मार्क्स, 6th वाले का I'm talking. So it's a very simple problem. Solution for the 6th one. Given
the function is x minus cos x. So differentiating with respect to x, f dash of x will be 1 plus sin x. Now, how do we show that the function is increasing? It's a trigonometric function. Now, we know from trigonometry that we have learned earlier in 11th standard also. तो आप लिखिए sin x का जो वैल्यू है, write down, sin x value lies between -1 and +1. तो आप लिखो we know that sin x का value is between -1 and +1 for all x. x का कोई भी वैल्यू डालो, sin x का वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में आता है. This is already known to us. Now, but what do we want? 1 plus sin x. So I will add 1 throughout the inequality. So लिखो adding 1 throughout above inequality. ये सिर्फ एडिंग 1 थ्रू आउट भी लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा. तो इसको +1 करना है, तो +1 -1 0 लेस देन इक्वल टू 1 plus sin x is less than or equal to 2. So therefore, what do we obtain? 0 is less than or equal to, this is our f dash of x, and f dash of x is less than or equal to 2. So you observe f dash of x is greater than equal to 0, na? Put it down. Since f dash of x is greater than or equal to 0, the given function is increasing. The given function is increasing. ठीक है, for all x. That's it. Problem is over. कुछ नहीं करना था. Very simple example. In few steps, we have got the answer, and that is the reason why इसका जो weightage है वो 2 marks है. So please note down. If any difficulty, please let me know. I hope everyone understood the procedure for this problem. 6. Yes, sir. Okay. Very good. Now students, let us move on to the solution for the 7th example. Solution 7. यहीं से start करता हूँ मैं इसका solution. So given the function is log of, अच्छा f of x में y दिया है ना, तो y जैसा दिया वैसे ही लिखेंगे, not a problem. Let us write it down. It is y. Y is log of 1 plus x minus 2x upon 1 plus x square. Now let us differentiate this. So differentiating with respect to x, y का derivative with respect to x is dy by dx, log of 1 plus x का derivative 1 upon 1 plus x minus sign bracket u by v rule. ठीक है, so 1 plus x square remaining same, 2x का derivative 2 minus 2x remaining same, 1 plus x square का derivative is 2x whole upon 1 plus x square the whole square. ठीक है, please check your steps with that of mine. अभी इधर न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर दो आप. So this is further equal to 1 upon 1 plus x सेम रहेगा. इसका जो डिनोमिनेटर है that is 1 plus x square the whole square. Now simplify and tell me what is the numerator. Tell me what's your numerator after simplification. X square. Okay. पूरा simplify करने के बाद you are telling
Yes, sir. Okay. Now, uh, 1 second. I could observe there is something. ये जो है 2x, सॉरी दिस इज y ना, ये देखो ये y वाला थोड़ा जरा ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, ये 2 प्लस एक्स है. जस्ट मेक अ करेक्शन. 2x अपॉन 2 प्लस एक्स है ना, आई डोंट नो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने गलती से लिख दिया. जस्ट मेक अ करेक्शन ऑफ दिस. ये फर्स्ट वाला पार्ट ठीक है, बट दिस गोज रॉन्ग. जस्ट 1 सेकंड, जस्ट मेक अ करेक्शन. जस्ट लेट मी चेंज है. इसमें 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, आई डोंट नो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ से देखा मैंने. दिस इज 2 प्लस एक्स, इट्स माई मिस्टेक. प्लीज राइट डाउन दिस. ये तो इसका डेरिवेटिव तो सेम रहेगा, अब ये चेंज हो जाएगा थोड़ा, है ना. नाउ व्हाट विल हैपन, u बाय v रूल. तो v, you are also saying no one told me, v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर. ठीक है ना, ये y दिया था हमें. अभी इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज तो गोइंग टू रिमेन सेम, 2 प्लस एक्स डी होल स्क्वायर. तो ये 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बिकम 4 अपॉन 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर. चलो नाउ टेक एलसीएम एंड सॉल्व फॉर दिस. अभी इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करिए आगे. क्रॉस मल्टीप्लाई. This is our dy by dx. I hope please make a correction. This is the correct one. Now, what will happen, students? LCM लेंगे तो dy by dx will be further equal to denominator, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा, so it will be 1 plus x into 2 plus x the whole square and 1 into this, so 2 plus x the whole square का expansion, so it is 4 plus 4x plus x square minus 4 multiplied to both of them ना, तो ये आएगा minus 4 minus 4x. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो सिंप्लीफाइड वाला dy by dx है ना, वो ये 4 इसके साथ कैंसिल, ये 4x इसके साथ कैंसिल. तो न्यूमरेटर में वी आर हैविंग x स्क्वायर अपॉन 1 plus x into 2 plus x, the whole square is our dy by dx, or you can say this is our f dash of x. Please make a correction and reach till here. By mistake I have written that, so ये 2 plus x था. Now what he is saying, we have to prove that this function is an increasing function on the domain. At that time x का जो वैल्यू है वो greater than -1 होना चाहिए. This function is defined if x का value is greater than -1. Now let us check whether this function, how we have to prove increasing. अभी देखो उसने क्या दिया हुआ है, x is greater than 1 ना, सॉरी x is greater than -1. तो लिखिए since x is greater than -1, therefore 1 plus x will be always greater than 0, है ना. इस 1 को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया. तो अगर x का वैल्यू 1 से -1 से बड़ा है तो 1 plus x will be always positive. तो चाहिए तो आप क्या करो, ये जो dy by dx मिला ना हमें, you number this as expression 1, ये जो dy by dx है. तो इसमें हमने क्या बता दिया कि 1 plus x is always greater than 0, है ना, इतना तो बता दिया हमने. Now 2 plus x the whole square is always greater than 0. Write it down. Also on the next line, 2 plus x the whole square is also always greater than 0. x का आप कुछ भी वैल्यू डाल दो, 2 plus x the whole square will be always greater than 0. And as well as
एक्स स्क्वायर, अच्छा अभी सिर्फ न्यूमरेटर ही बच गया, अभी एक्स स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। तो एक्स स्क्वायर विल बी ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर विल बी ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। तो फंक्शन किसके लिए डिफाइंड है, व्हेन x इज ग्रेटर देन -1, तो -1 से जो बड़े वैल्यूज है उसके लिए डिफाइंड है। बट x का वैल्यू कैन इट बी 0, अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो क्या फंक्शन डिफाइंड है, ये तो 0 हो जाएगा। तो इन दिस केस इट इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर ये दोनों तो पॉजिटिव है, इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव है, तो x स्क्वायर भी पॉजिटिव ही रहेगा। So what do we conclude from here, students? That therefore dy by dx will be also always greater than 0. So what has happened? Always greater than 0 आएगा. So the function is an increasing function on the domain. But domain में x का जो value है वो greater than -1 होना चाहिए. So write down final answer. dy by dx is greater than 0. I repeat why so it is greater than 0, students. X is greater than -1. So 1 plus x will be always greater than 0. 2 plus x the whole square will be also always greater than 0. तो ये भी greater than 0 है, तो ये भी greater than 0 है. तो x square will be also always greater than 0. आप x का कोई भी वैल्यू डालिए यहाँ पे, you put any value of x, दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव भी वैल्यू डालेंगे तो उसका स्क्वायर करके वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो dy by dx is always greater than 0. तो फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। तो ऐसा लिखो फाइनल आंसर, hence the given function, hence the given function is an increasing function on its domain, on its domain, where, or you can write down if, या where लिखो, where x is greater than -1, on its domain where x का वैल्यू should be greater than -1. ठीक है, write down. With this problem is over. So if this problem comes, I don't think so it can be asked for more than 3 marks. 3 मार्क के लिए sufficient है ये. Please make a note of this. Any doubt in this? अच्छा, इनफैक्ट सी व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, ये जो हम इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर x का वैल्यू 0 हो गया है ना, इफ दिस x का वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 पे भी तो हम डिस्कस कर सकते हैं ओवर हियर। तो इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लिखेंगे तो इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। बट अगर f डैश ऑफ x 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो नहीं, हाँ पर ठीक है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कब होगा, व्हेन एक्स इटसेल्फ इज ग्रेटर देन 0। बट अगर इक्वल टू 0 हो गया है ना, अगर एक्स का वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया तो व्हाट विल हैपन, एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स का वैल्यू 0 हो जाए, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन -1 है ना, व्हाट इज टेलिंग, what he is saying, x is greater than -1, तो -1 से बड़े वैल्यूज, मतलब उसमें 0 भी तो आ जाता है, तो अगर 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो x स्क्वायर इनफैक्ट आई कैन से इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 हो गया तो dy by dx जो है
that will be either greater than 0 or that will be equal to 0 also. क्योंकि अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो ये पॉजिटिव, बट क्योंकि न्यूमरेटर में 0 है तो dy by dx इक्वल टू 0 हो जाएगा. मीन्स it is tangent line is parallel to x axis and hence the function is an increasing function on its domain where x is greater than -1. Is the function defined at 0? हाँ, है ना, हो सकता है greater than equal to 0 पे भी ये possible है. तो write down this. तो आपको क्या करना है, जरा ये जो greater than लिखा था strictly, you just make it greater than or equal to 0, क्योंकि 0 डालेंगे तो ये dy by dx 0 भी तो हो सकता है. So with this we have finished off with the 7th problem also, and we have finished off with the concept of increasing and the decreasing function also. ठीक है, ये concept हो गया. अभी हमारा इस application of derivative topic में एक last concept remaining है, that is maxima and minima. So that obviously we are going to discuss it in the next coming lectures. Okay, please make a note.